So for an example, if we are doing advertisement, we want people to get an ideology like this product is great and they should talk about it on themselves, and it should be kind of a chain reaction amongst, the. So, as a experienced marketer, what do you think about word of mouth? Do you consider it as a marketing tool or not really? It's kind of not a marketing tool, but it is basically the principle of marketing. Whatever we are trying to do, irrespective of advertisement, marketing campaigns, or branding for that matter, everything resolve around where, we wanted to create word of mouth only. So, for an example, if we are doing advertisement, we want people to get an ideology like this product is great and they should talk about it on themselves, and it should be kind of a chain reaction amongst, the masses where, they just take this advertisement and they start doing publicity on their own behalf. So if you understand the whole perspective about it, word of mouth is the very basic principle why we wanted to do all kind of marketing, where people talk about it. बहुत simple example है, you usually do this, lot of time. आप कोई कार खरीद रहे हो, कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो आप अपने दोस्तों से पूछते हो, अपने पेरेंट्स से पूछते हो, अपने सिबलिंग से पूछते हो कि हाउ दिस प्रोडक्ट इज़, और वो उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं. अगर कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा बताता है तो ऑटोमेटिकली डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाती है. सो बेसिकली ऑल मार्केटिंग रिवॉल्व्स अराउंड दिस कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोग बात करें एंड वर्ड ऑफ माउथ ऑटोमेटिकली फैल जाए. In the end, the goal is to get word of mouth marketing, for us. So I think so. It is not a tool. It's basically the goal where we need to head it out. Yeah, I think just push our advertisement and branding kind of. Basically, you can say push also, but a lot of time companies wants to work in a way that it should be seamless, where the product is so great and the marketing and the advertisement are able to do justice to that product. And people are able to click with it, as soon as possible, and they should talk about it on their own. For example, Apple do this only, a lot of time. What do you think? Why they do Apple events yearly basis? Right. It's kind of a marketing hype, and when they do it, they take out some revolutionizing product, and then a lot of people talk about it. And word of mouth can be negative and can be positive. Again, that's a different aspect. But yes, the goal is to get word of mouth, Yeah. So that is basically. Okay, well said. If I continue this conversation and as we had a conversation about campaigns, so how can you, most people don't really know what is campaign. As I can see, most marketing people also don't know what is campaign. So how will you put that in a very relatable word? I think so. To be very frank with you, Shivangi, a lot of marketing people know what campaign is. It's just in Dehradun, a lot of people don't know and they call themselves a marketer. So I think so that's the line that we should draw, where who knows what. And the only reason is this because a lot of people are considering social media as a marketing, as the wholesome marketing for their brands. Social media is one of a part of it, and campaign only does not resolve on the social media. I think so I am answering the question that you are trying to ask me, because there are a lot of people who are working on a various level of marketing, and a lot of people know what campaigns are. It's just in Dehradun there is a bit of gap, basically information and awareness gap, where people don't understand the wholesome of marketing is. Right. They think doing a social media for their brand is good enough to do a marketing, but there are a lot of things that involved into it. Social media is just one part of it. And that's where a lot of people are focusing right now. That is why we think. But in sense of campaigns can be anything. Campaign resolved around a lot of things. It is also your offline marketing, your print media marketing, your public relations, also your social media, your advertisement, what you're talking about, the offer that you wanted to do it. So it is a whole thing of it. Your influencer marketing all comes into under the umbrella of one campaign. I wanted to execute this offer and how I wanted to touch bases with the ground. So that's where the campaign is built up. And then there are executing tools like social media marketing, there are digital media marketing,
then we do YouTube, let's suppose like this also, Yeah. and there are a lot of execution points that are created through it, and then the whole campaign is created. There are billboards, there are a lot of things, because they wanted to grab as much as attention as possible, and they wanted to make sure that their product is, there in the market. So the campaign is a very big thing, it's not just, it's not just a small portion. So basically talking about in that sense. Yeah. Okay. So as you're associated with the digital marketing, wholly associated with the digital marketing, so how much do you give preference to print media? So suppose say like many of the clients we had a conversation with, they are still depending on like print media, like billboards बहुत मतलब हम लोगों के लिए billboards बहुत अच्छे हैं या poster छपा है pamphlets छपा है तो as a digital person आपका उस पे क्या view है? What do you say? I'm going to give you a very contradictory answer to it, but you know what? I am very much aligned towards billboards and print media marketing also, because that comes under the marketing umbrella also. That's what we talked about right now also. Because digital marketing is also one aspect of it. So because when we do consultancy, we tell people, why don't we go and get a board up? Why don't we do a billboarding of it? Because I'm not only associated with digital marketing, I'm more associated with creative form of marketing. Where digital marketing also one aspect of it, and then consultancy is also one aspect of it. Print media is also one aspect of it. Public relation is also one aspect out of it. So, again, it depends upon business to business, like what get aligned toward them, like is billboard marketing is doing justice to them, or social media marketing is doing justice to them. It's basically where their audience is, where their niche is, and are they able to target it or not. Because there are a lot of people, there are a lot of brands who are using billboard which are getting aligned towards that digital media, QR codes and all those things, or they are doing some kind of a campaign where people are going up and they are scanning the billboard, and then they are getting aligned towards digital aspect of it also. So it is again not a preference, but again execution point where they wanted to go and how they wanted to execute it. And again, it depends upon the budget of brands to brands or clients to clients, what they want to do and what they don't want to do. Yeah. Many of if I put this into words, so is branding is one time effort, or it's like कि हमको time to time इसे कराना चाहिए, or what is like? Branding never stops, to be very frank with you. First of all, a lot of people doesn't understand what branding is. Branding is not just getting designs and aligning your logos or aligning your colors, but it again talks about your brand, where your brand is placed, what your brand wants to do, how they wanted to communicate to the people. So I don't think it's a one-time effort. It's an ongoing process, and a lot of people have missed this, and a lot of brands have missed this, to be very precise on it. And I think so that hurts them also, especially Indian brands, because they were not very keen focused on the branding part. They were very keen focused towards sales. And I will not go to blame them also, because our culture and our everything, single thing is aligned towards that way, because we work more efficiently like that. But branding is very important. A lot of people, a lot of bigger brands, a lot of foreign brands, when they enter into the Indian market, and they have made them realize why it is what it is. And a lot of brands are now trying to adapt to it, and a lot of brands already adapted to it. But again, branding is not a one-time process. It's an ongoing process. I think so it is aligned as much as it is aligned with the marketing. It's keep going on, So I don't know if I'm able to answer it or not. No, you're pretty much clear about it. I think our viewers also get some idea out of it that is branding and with its other aspects. अगर मैं अगर सोशल मीडिया के अब टॉपिक पे आती हूँ, तो व्हाट इज सोशल मीडिया एक्चुअली? फॉर आई नो अलग अलग ब्रांड्स की सोशल मीडिया अलग अलग होते हैं, बट फॉर यू व्हाट इज सोशल मीडिया लाइक? फॉर अ बिजनेस. For a business, social media is basically, what the concept of social media is still very great if it is used in a proper manner. If you understand social media, you'll understand it allows you to connect with your audience on a very personal level. That's where it shines a lot. And as of now, I think it's one of the greatest tools people can use to communicate
to their audience or to grab the audience, because it is just like this. It's just you should be able to communicate with them. That's the only thing that you need to do. A lot of brands, they are not communicating, they are not humanizing their content. It's just offers, 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 offers. And sometimes it hurts a lot, sometimes it works a lot. But again, social media, the tool of social media is basically is getting to know the brand. You're socializing, right? So when you socialize, what do? You talk about what you did yesterday. You talk about what is happening in your life. So basically, it is the same thing that brands should talk about in their media platforms also, to their consumer also, and they will be able to communicate and connect with the brand more oftenly, and in a very intellectual level also, and they'll understand where the brand has come from and what they're trying to do and where they are trying to go also. So I think so that's what the social media is for me. Again, it depends to brand what and how they wanted to communicate to it. But personally, for me, I think so social media is more about humanizing the content, talking to their consumers, talking to their niche market, talking to the, sharing what happened on their daily basis operations also, if it is possible. And again, it is not compulsory also. Whatever they can, they should. I think so then social media is very relatable, because if I ask you, what social media accounts do you follow the most? Mostly friends. Yeah. Why? Because the term you've used, humanizing the content. Not only that, I think so. Why do you do it on your friends basis? Because you wanted to know the update. You are not able to meet them on a regular basis, right? That's why we get follow and we do followers. And people complain about it. Why people are not following us, the brand? Because you're not giving something to follow. Yes. There are just posts and there are just offers, and you are doing it anyway. If somebody wants to know the offers, they will just search you up and they'll see what the offers is. But there's nothing that they should follow you guys. There's nothing. Why YouTube, when a lot of people, why do you need to subscribe to those channels? Because you're keen. अच्छा कल क्या होने वाला है यार? I wanted to know. Exactly. There's a story to it, Update. Yeah, there's a story to it. There's आज ये हुआ. अच्छा कल क्या होने वाला है? It's the same thing what we do in a daily soap series also, where we get excited, कि अरे इन्होंने क्लिफ हैंगर में छोड़ दिया है, अगले हफ्ते एक और सीजन आने वाला है, क्या होने वाला है उसके अंदर. Curious also, yes, exactly. Curious also, and then they get related to that. Right. Lot of YouTubers हो गए, ये सब कुछ हो गए, इनका content चलता है इसलिए क्योंकि a lot of people get connected to these guys, Same way brands needs to get connected to it also. It's like, अच्छा अब क्या करने वाले हो? Why bigger brands like Apple, why bigger brands like other companies, have like Vogue, Zara or H&M, all of these brands have a bigger following than the other brands. It's just because they are telling the stories in their manner, and they're sticking to what they wanted to do. And I think so that's paying them, I guess, and that's what I think so we should also try to integrate also somehow, and if we are able to do that, that's great. Again, but it depends. I think so that's what in a nutshell, that's what social media is for me. If I need to execute social media, I think so I'll execute it in that manner. Okay. Yeah. I think now I get it कि काफ़ी accounts ऐसे होते हैं कि just stock pictures. There is no human factor. Because I get bored, ना? हाँ. Human mind is monotonous चीज़ों से बहुत जल्दी बोर होता है. सही बात. को कुछ मिर्च मसाला चाहिए ही चाहिए. वो साइकोलॉजी है. मैं एक तरह की पिक्चर्स डालता रहूँगा, एक तरह के वो चीज़ डालता हूँ. उससे बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट है सबके पास. ऐसा नहीं हो सकता कि कोई प्रोडक्ट लाइन बहुत ज़्यादा निकाल सकता है. बट अगेन मार्केट सोशल मीडिया पे कैसा करना चाहते हो कि यू कैन टॉक अबाउट द स्टोरी अबाउट इट. आज क्या हुआ? अच्छा आज ये कंज्यूमर से ऐसे बात हुई तो ये इश्यूज आ रहे हैं. आज उस कंज्यूमर से ऐसे बात हुई तो ये इश्यूज आ रहे हैं. इस पे हमने क्या किया? लॉट ऑफ पीपल आर लाइंग टुवर्ड्स कि आपने किया क्या. मेरा कोई प्रोडक्ट है उसके ऊपर देखो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 10 out of 10 times योर प्रोडक्ट इज ग्रेट. कभी नहीं हो सकता. There are always going to be some kind of malfunction. There are always going to be an error, because there are always room for error. And that's what makes us human also. That's what makes them brand also. ठीक है. What makes them stand out as a brand is how quickly they react to it. How they quickly, to be very precise on it, how quickly they respond to those problems and fix those problems. How quickly they take that feedback
and work on those feedback, to ensure that if the problem is occurred, they make sure that this problem is not going to occur again. Or even though if it is there, so they get to the depth of it, why it is there. That's what makes them brand. It is not brand because they're perfect. No brand is perfect. So it's like that. If I give you, wherever you go, it is always about how much you want to evolve and how much you wanted to work with. In the end, it is all about consumer and how you treat that consumer and what is the experience of that person when they buy their product, how much they are able to relate to that product. So I think so that's what it talks about, and that's what should your social media also, the day-to-day, everyday customers, consumers, and all those things. Because anyhow, it depends upon brand, but let's say XYZ brand, if I get those brand, I think so I'm going to execute it in that manner. I wanted to make it raw, and I wanted to make people understand what goes around on a day-to-day basis for a brand to execute what they're trying to see, and the outside world. Yeah. Right. So मैंने काफ़ी रिसर्च करी एक चीज़ पे कि इन देहरादून पर्टिकुलरली काफ़ी बिग ब्रांड्स आ रहे हैं, जैसे सोशल हो गया, फर्जी हो गया, ब्लू स्टेट हो गया, और काफ़ी ब्रांड्स जा भी चुके हैं फॉर सम रीजंस, एंड देर आने भी वाले हैं काफ़ी ब्रांड्स. बट देयर इज़ अ रिसर्च ऑफ माइंड कि इन ब्रांड्स का स्टार्टिंग में तो बहुत हाइप रहता है कि दिस ब्रांड ओ गॉड एंटर द देहरादून, दिस दैट. बट आफ्टर सम टाइम देयर इज़ अ डिप, not minor one, there's a major one. So as a marketer, I know आपने भी ये चीज़ consider करी होगी in particular देहरादून कि after some period of time brands go to dip. So what are your thoughts on that? Basically, you have to be very frank with you. जब भी कोई नई चीज़ आती है, लोग बहुत aligned होते हैं उस चीज़ को try out करने के लिए, Or I don't know why, but I don't think so. These big brands are doing enough R&D to understand the kind of market and the kind of people and basically the pocket size that exist here. Right. बहुत simple perspective दो तो बहुत MNCs है नहीं देहरादून में, and it's a very small city. Right. Basically, it's a town. It's not a city also. और बहुत regular basis पे people are not अलाइन की वो स्पेंड करते हैं यहाँ पे, बाहर जाना पसंद करते हैं. बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट मिडिल क्लास, अगर मैं दिल्ली के मिडिल क्लास को और देहरादून के मिडिल क्लास को कंपेयर करूँगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में. Yes, there is. वहाँ के लोग सैटरडे संडे प्रेफर करते हैं बाहर जाना क्योंकि ट्रेंड है वहाँ पे अब ये एक कल्चरली इन्फ्यूज हो गया है कि भाई बाहर तो जाना ही जाना है. बट देहरादून में लोगों को है, और देहरादून के पास ऑप्शंस बहुत है यार. मतलब देहरादून के लिए वो फर्जी जाना या फिर वहाँ जाना इज नॉट एस्केप फ्रॉम द क्योस, क्योंकि आपके पास पहाड़ है, मसूरी है, ऋषिकेश है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे मेरे को इतना स्पेंड नहीं करना और मेरे पास जो मेरे को चिल करना है वो भी मिल जाएगा मेरे को. तो एक तो आई डोंट थिंक सो उन्होंने अपने कंज्यूमर को पढ़ा है कि देहरादून का कंज्यूमर क्या है, बिहेवियर क्या है. टॉपिक होता है ना कंज्यूमर बिहेवियर. आई डोंट थिंक सो दिस ब्रांड्स आर स्टडीइंग दिस. और या तो जिन्होंने भी आई डोंट नो आर दिस फोको मॉडल और फोमो मॉडल, आई डोंट नो व्हाट इज इट, कि ये फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड है या फिर कंपनी ऑपरेटेड है, क्या है. पहली चीज़ तो ये, because I think so bigger brands does not tend to make this kind of a mistake, and if it is then it's a blunder on their part. Absolutely, there's a sharp dip also. एक तो ये तो है ही रीज़न है. सेकेंड सैचुरेशन भी है. एक साथ बहुत सारे ब्रांड को इंट्रोड्यूस करने का मतलब ही ये होता है कि आप अपने कंज्यूमर को बहुत कंफ्यूज भी कर रहे हो, और जब उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं देन एक्चुअली में एक आप ऑप्शन बनते चले जा रहे हो. और फिर इस सैचुरेशन के बाद हाउ वेल आर यू परफॉर्मिंग द मार्केटिंग, वो अभी भी कन्वेंशनल वे ऑफ मार्केटिंग कर रहे हैं, और या फिर ये सोच रहे हैं कि हमारा ब्रांड जितना अच्छा परफॉर्म करता है दिल्ली या MTNL सिटीज़ में उतना अच्छा परफॉर्म करेगा टाउनशिप में भी. और वो एक प्रॉपर कंसल्ट करनी रहेगी इसको मार्केट कैसे किया जाए, एडवर्टाइज कैसे किया जाए, प्रमोट कैसे किया जाए, वो चीज़ें हो नहीं रही है बेसिकली. और सब पे सारे लोग सेम चीज़ कर रहे हैं. अब कोई भी ट्रेंड उठा लो आप देहरादून का ना, सैटरडे क्या है, DJ होगा या नाइट सिंगिंग होगी. इसके अलावा आपने अभी कुछ भी सुना है? वेरी प्रेडिक्टेबल आई गेस. मेरे को पता है क्या होना है. अगर मैं उस चीज़, देखो मैं एक चीज़ बार बार नहीं कर सकता हूँ ना, मैं हर सैटरडे जाके नहीं कर सकता. एंड देयर शुड बी एन एक्सपीरियंस. मोर लाइक अ दिल्ली ट्रेंड. इट्स नॉट अ दिल्ली ट्रेंड, इट्स काइंड ऑफ अ कॉपी एंड पेस्ट.
Yes. मतलब क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे वहाँ पे चल रहा है तो लेट मी टेक दिस एंड पुट इट हियर, बट दे डोंट अंडरस्टैंड वहाँ पे कॉर्पोरेट्स यार 7-6 दिन काम करते हैं, उनको चाहिए 2 दिन कि वो मजे करे। यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे सेंस ऑफ स्ट्रेस जैसे का लेवल का ही नहीं है। आप समझो ना ये बात कि है ही नहीं यहाँ पे कोई भी, इसलिए आप कोई भी ब्रांड उठा लो वो दिन में परफॉर्म नहीं करता, दिन में उसके पास They're crowd more नहीं है। active in night और हम मतलब पे भी है। हाँ वीकडेज में परफॉर्म नहीं करता, हाँ। जितना टेंस टू वो करते हैं वो अलाइंड होते हैं सिर्फ वीकेंड्स के ऊपर। Right. वो बहुत बड़ा गैप है, वो इसी गैप के पहले तो लोग ही नहीं है इतने, इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतना सब कुछ है, पहले तो लोग नहीं है। सेकंड ऑफ ऑल द काइंड ऑफ सर्विसेज दे प्रोवाइड इन द बिगनिंग एंड द सर्विसेज दैट स्टार्ट डिक्रीजिंग। अब खाना देख लो, क्वालिटी ऑफ खाना देखो, ठीक है मैं मानता हूँ भाई nobody can cook 10 out of 10 times, that is acceptable, बट आप एक बड़े ब्रांड हो तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को एडजस्ट करना पड़ेगा कि यू आर कीन कि आप अपनी सर्विसेज उस लेवल की दे रहे हो। सेकेंड ऑफ ऑल यू आर प्रमोटिंग योर सेल्फ, यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन टू मार्केट। मतलब कोका कोला कितना बड़ा ब्रांड है, कितने सालों से ब्रांड है, वो आते अपनी मार्केटिंग कभी ऐसा नहीं होता कि बजट कम होता है, हमेशा बजट बढ़ता है। देहरादून में उल्टा है। I think more of their revenue go to the marketing only. यस, और यहाँ पे देहरादून में उल्टा है, यहाँ पे लोग पहले बहुत स्पेंड करते हैं फिर बजट कम करते चलते जाते, कम करते चलते, बट दे डोंट रियलाइज कोई और प्लेयर एंटर करता है मार्केट में, वो बड़ा बजट लेके आता है तो उनकी पोजीशन ले लेता है, वो फिर साइड हो जाते हैं, फिर वो करता है, मतलब एक चेन है। इसलिए वो डिप बहुत शार्प दिखता है लोगों को ना, इसलिए आप लोगों को पता चल पाता है कि अच्छा ये हुआ है। बट कोई अच्छे ब्रांड्स होते हैं जो इस डिप को मैनेज करना जानते हैं, आई थिंक फिर सोशल है वो बहुत अच्छा मैनेज करता है इस चीज़ को, मतलब दे आर डूइंग प्रीटी ग्रेट आई थिंक सो इन द मार्केट। आई एम नॉट अवेयर कि कितना सेल्स वो करते हैं और क्या नहीं करते हैं, एंड टू बी वेरी फ्रैंक विद यू मैंने नहीं की भी नहीं R&D चीज़ों की, बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन हाउ वेल दे वांट टू डू इट, हाउ एक्टिव दे आर, और क्या उनकी स्ट्रैटेजी ठीक है मार्केट करने की, ये भी बहुत बड़ी बात है। I think so you are more experienced than me to talk about it. Reason behind it, you guys go and talk to these brands on a very daily offer. Yes, yes. और जब आप उनसे स्ट्रैटेजी की बात कर रहे होते देर लगे कॉर्पोरेट डिसाइड करेगी। हाँ। तो बहुत सिंपल सी बात है ना, जो टीम मुंबई में बैठी हुई है उसको क्या पता देहरादून में हो क्या रहा है, जब तक उन्होंने ग्राउंड रियलिटी देखी नहीं है देहरादून की, उनके पास ये भी नहीं मैं मेक श्योर कर सकता कि उनके पास एनालिटिक्स नंबर्स ठीक जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। Local, I don't think so. There's a है, अरे ऑब्वियसली है, मतलब उसमें तो कोई इफ एंड बट ही नहीं है ना, एंड दैट इज वेयर दीज ब्रांड्स आई एम नॉट गोइंग टू से स्ट्रगल बट गेट अफेक्टेड आल्सो। और फिर वो बहुत सारा चंक ऑफ मनी इसके अंदर पुट ऑन करते हैं मार्केटिंग में ताकि फिर से बम्प अप कर पाए, with but the biggest. they are not realizing, they are not planning themselves, yeah they are not planning themselves, you know, वो अपने आप को प्लान आउट करके नहीं चल रहे कि मैं साल भर क्या करूँगा। यहाँ पे लोग बस आज की या कल की फिक्र कर रहे हैं, ये फिक्र कर ही नहीं चाहिए कि मेरे को परसों क्या करना है, नरसों क्या करना है, ये पता ही नहीं है बेसिकली यहाँ पे लोगों को। और अगेन वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ के भी लोग भी सेम चीज़ें जो मैंने पहले बताया आपको कि दे आर मोर अलाइन टूवर्ड्स कि मेरे को ना वो चीज़ करना बहुत ज़्यादा बेटर लगता है, क्या बोलते हैं पोस्टिंग करना और बिलबोर्ड करना, बट दैट इज़ नॉट मार्केटिंग, यू आर नॉट डूइंग समथिंग एल्स। मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्ट क्या है, फिर उसके फीचर्स क्या है, प्रमोशन के लिए क्या करने वाले, दैट इज़ कोर मार्केटिंग होती है वो बेसिकली, यू नो 4 Ps ऑफ फिलिप कॉटलर, वही सेम चीज़ें हैं मतलब। और वो मेरे को नहीं लगता यहाँ पे बहुत सारे लोग यूज़ कर पाते हैं, या फिर कंपनीज भी यहाँ पे एजेंसीज जो है, मतलब मेरे को नहीं लगता लॉट ऑफ कंपनीज नो दैट दे आर ट्राइंग टू डू दिस और नॉट, और या उनको ये नॉलेज हो या फिर वो अपने क्लाइंट को बता पाए, बिकॉज दे आर मोर टूवर्ड्स कि क्लाइंट खुश होना चाहिए। और मार्केटिंग वाले लोग अक्सर क्या होते हैं कि वो मिरर दिखाना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक अच्छी कंपनी जो होती है वो आपको आपकी खामियां बताती है कि भाई इन पे काम करना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं काम करोगे कोई मतलब नहीं होगा। आप कितनी अच्छी रील बना लो, कल के दिन अगर मैं रील देख के गया, मेरा एक्सपीरियंस उस जगह पे अच्छा नहीं, मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ यार एज अ कंज्यूमर, एंड पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। और वो आई थिंक सो दैट्स वेयर दिस good brands have missed out the opportunity to you know embrace it and use it for their own advantage, I guess. मेरे को लगता है जहाँ तक, बट हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट हो सकता है मैं सही भी, बट We'll 100 back on that. yeah absolutely it can be, you know. So but मेरे ख्याल से तो यही है कि they are not reading the market well, and somehow they are not doing great marketing and great R&D also. They are sticking to very conventional methods that is not working. And second, there is no PR. Right, right. बल्कि मेरा दूसरा क्वेश्चन इसी चीज़ के ऊपर था कि व्हाट इज़ द
मेन फैक्टर कि आपको लगता है कि ये लोग क्यों लैक कर रहे हैं? बट आई थिंक आई गॉट माई आंसर दैट रिसर्च इज द मेन फैक्टर. बट डू यू थिंक देयर इज अनदर फैक्टर? Yes, there's a research, there's marketing, और जो मैंने आपको पहले भी बताया, पॉकेट ही नहीं है ना. Yes. मार्केट That depends on the research also, ना. मतलब वो रिसर्च पे ही है कि ऑब्वियस बात है. अब मुझे एक बात बताओ ना, तुम्हें कल के दिन एक ऐसी सिटी में जाना है जिस सिटी में लोगों को पानी बहुत पसंद है और पीना बहुत पसंद करते हैं. या तो आप पानी के साथ आपने कुछ ऐसा रेवोल्यूशनाइजिंग किया कि आप उस सिटी में एंटर करें, उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि अरे ये मजा आ गया इस चीज का, है ना. बट अगर नहीं है, मैं वहां जाके बोलूंगा नहीं यार, एक काम करो, सिर्फ फ्रूट्स खाओ. I know. मतलब सेंस नहीं बन रहा ना उस बात का. As a consumer, I will be, और सेकंड चीज है ही 10 लोग. हाँ. सबसे बड़ी बात भी एक और ये कि जब है ही 10 लोग, फिर मतलब वो 10 लोग कब तक बार बार वहाँ जाते रहेंगे. सेंसलेस हो जाता है वो एक पॉइंट. रेशलेस हो जाता है. सेकंड चीज, वो जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी है वो स्टूडेंट्स है. और आपने सबसे बड़ी चीज़ देखी होगी, स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत खर्चा कर लेते हैं जो कर लेते हैं, और स्टूडेंट्स को ही सबसे ज़्यादा पसंद है बाहर जाना, या मिलेनियल्स को ही सबसे ज़्यादा पसंद है, मतलब ये ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल. हाँ कि मेरे को वहाँ जाना है, या ट्राई आउट करना है, या कैफेज में जाना है, बैठना है, मुझे ये सब कुछ करना है. बट उसके अलावा यहाँ पे कोई कुछ कर ही नहीं रहा ना उन जैसे के लिए. आई थिंक सो देयर आर वेरी फ्यू रेस्टोरेंट्स हु आर वर्किंग अराउंड ऑन कंज्यूमर बिहेवियर. एंड मेरे ख्याल से टॉप ऑफ द माइंड जो मेरे को आता है, एक रेड कोल आता है बस दिमाग में, जो अपने कंज्यूमर के बारे में सोचता है और उस चीज़ों के ऊपर काम करता है. Right. Their marketing is really. I think so, yes. I know they're doing it, and they really put their thoughts into it, what they're trying to do. They're not trying to oversell the market. They're selling to the proper people who are, responsible for this. मतलब कि उनके बिजनेस के लिए उनको पता है कि मेरे को कहाँ मार्केट करना है, कैसे मार्केट करना है, कौन से ऑफर्स करने हैं, किस किस सेगमेंटेशन को टारगेट करना है. यहाँ के आदमी लोगों को सेगमेंटेशन ही नहीं पता. आप जाते हो ना तो आप सबसे बड़ा फीडबैक क्या देते हैं, मुझे तो टॉप लोग चाहिए. अब टॉप लोग होते कौन है? So that's where it comes out to be, and I think so that's where these brands or even their agencies need to understand that there is something wrong, and they need to work on it as soon as possible, otherwise it will be too late. Yeah. Right.